तिलक लगा के मिट्टी का तू बाजी आज लगा ले, ओ तिलक लगा के मिट्टी का तू बाजी आज लगा ले, तुझ में जो चिंगारी है उस शोला आज बना ले। जान लगा के खेल खिलाड़ी, ओ जान लगा के खेल खिलाड़ी, साथ हमेशा स्पोर्ट्स इंडी, शान बढ़ा तू रहे अगाड़ी, जीत की भाषा स्पोर्ट्स इंडी। Good evening, hello and welcome to this episode of the World of Sports on the Sportsindi channel. The program is produced by Miti Group and the idea is conceptualized by Supriya Badve, who's the CEO of Sportsindi. This is the first Saturday of the very summery month and we embark on a new area in sports, in the world of sports. The way sports is consumed, the way sports is promoted, and yes, the way sports is reported. This is the growing and exciting field of sports, of course, but this is the exciting field of sports journalism. This entire month, we are going to understand the various aspects of sports journalism and its possibility, of course, as a career for many sports enthusiasts as well. We definitely will have Supriya Badve joining us on the program, but today we do invite our guest for this evening. Yes, may I introduce to you Sandeep Chavhan ji. But first, let me invite him on the show. Thank you. Thanks, Priyamvada, and thank you, Sportsindi, Very good evening. and everyone for having me on in this show. Yeah. Most welcome, and it's our pleasure. Absolutely. So, may I introduce Sandeep Chavhan ji, the media professional for almost 2 decades. Sandeep Chavhan has been associated with various sports and arts as a journalist as well as an administrator. He has traveled to about 39 countries for reporting world sporting events and has covered 5 Olympics, a Football World Cup, Commonwealth Games, 2 Cricket World Cups, and many more national as well as international events in this entire period. He has also been honored with the Best Reporter Award for the year 2003-2004 by the Sports Journalist Federation of India, and his documentary on Kabaddi was broadcasted on Fox TV in USA in the most popular series, You Got to See This. He has worked as national event head in VIP News Channel. His last assignment was with a leading event management company, O Media House Private Limited, as MD. Well, Sandeep ji, once again, welcome on this program. We discuss sports, and nothing but sports. But today, with your expertise, not just about the travel that you have had of so many countries and the reporting from there, but at the same time, as an administrator, also you have seen the other side of it as well. So, but first, let me talk about sports journalism, because this is something that we, want to start with in this month, and you're the first one here to talk about this. So, I think there are going to be a barrage of questions coming to you in the area of sports journalism. But first, what is sports journalism? Is it about sports, or is it more about journalism? What do you think? It's you just like you say that means when Uttara Mone contact me for this show, I asked her what will be the language for our interview. So she said that you can speak in any language in the English and Marathi, and I just said to her that I travel 39 countries, and believe me, language is never barrier for the sports. Means the sign language is the language for the sports. The enthusiasm, the courage, and everything it's belong to the sports. Means our Marathi literature, Mr. Vapukai always told that he read the paper from the back page, because back page is full of the sports news, and it's always give the encouragement, enthusiasm, and the energy to the reader. Because when you start with the first page, you always get the distracting news from the politics and everything. Means nowadays also, if you going to on the channel or any newspaper, you get the destructive news all over the world, from our city to the world. But the sports is the only thing, when you heard it, when you read it, it gives you immense pleasure. So just like that, you said that what is exactly the sports journalism in my way. अगर मैं अपने बारे में कहना चाहूँ तो मैं
हमेशा मजाक में लोगों को कहता हूँ कि इस देश में नरेंद्र मोदी और संदीप चौहान दो ही ऐसे बंदे हैं जो दूसरों के पैसों से पूरे देश घूमे हैं। मीन्स एज अ स्पोर्ट जर्नलिस्ट 39 कंट्रीज मैंने एज अ जर्नलिस्ट घुमा हूँ। जिस जिस अखबार में मैंने काम किया उस अखबार ने मुझे भेजा है। मैंने 5 ओलंपिक कवर किए। मीन्स माय लास्ट असाइनमेंट विद द लीडिंग एबीपी न्यूज चैनल, इट वाज अ immense experience. Means during the corona times I traveled across the Japan, Tokyo, and cover at least I think almost 1.5 months I was there, and it's a thrilling experience to cover that Olympic during the corona pandemic. So sport journalism, yes, एक अलग ही वर्ल्ड है। अगर जैसे जर्नलिस्ट, तो जैसे हमने मैं मुझे याद है कि जब मैं आईबीएन लोकमत में काम कर रहा था तो that time our editor Mr. Nikhil Wage, he first introduced the concept that citizen journalist. And nowadays with this social platform, everybody become a journalist because you have a mobile in your hand, social media is with you, there is a WhatsApp university, you just write, you just express yourself. So nowadays you can get any news before the newspaper or the TV channel through that social media. So nowadays everybody become a journalist. So what is our role nowadays? So our role Exactly. is giving a news. Instead of giving a news, we are giving a views. So our role is more important ever than before. Priyamvada. Okay, but do you see yourself more as a sports person, or do you see yourself more as a journalist? I'm not even talking about your administrative experience about it. किसी ने मुझे पूछा था। मीन्स एक बार मैंने किसी के ऊपर बड़ी टिकात्मक टिप्पणी की थी। आई वाज वेरी हार्श ऑन दैट प्लेयर एंड ही Uh, रैंग मी एंड कॉल मी अप एंड ही सेड मी दैट did you ever play this game ever, or do you have the right to criticize me? And I God, yes. understand, and exactly he said the right one. मीन्स हमेशा क्या होता है कि कभी कभी जल्दबाजी में, एक्साइटमेंट में हम कुछ ऐसा लिख देते हैं जिससे उसका करियर जो है या तो खड़ा हो सकता है या तो बर्बाद हो सकता है। और अभी हाल ही में अभी आपने देखा होगा कि जो बोरिया मुजुमदार, वन ऑफ द सीनियर जर्नलिस्ट इन आवर फ्रेटर्निटी, गेटिंग a 2-year ban for harassing the Riddhiman Shah, the cricketer. So this thing happened in the world also. So that day I understand कि when you're going to criticize someone, you should understand that game very strongly. मेरे स्कूल जमाने में मैं आई वाज द फुटबॉल प्लेयर, आई वाज द फुटबॉल कैप्टन ऑफ माय कॉलेज टीम, देन आई वाज अ इंटर कॉलेजिएट चेस चैंपियन. सो फुटबॉल चेस is my thing. But when you're going to write about the cricket or the so many games, that there's a kabaddi, kho, 28 discipline which is nowadays playing in the Olympic. पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी इतने सारे गेम खेल सकता है, लेकिन व्हाट इज पॉसिबल, यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट गेम, अंडरस्टैंड द नेटिविटी ऑफ दैट गेम, कहाँ कैसे खेला जा सकता है, कहाँ जैसे कि अभी गेम इतना, जैसे कि आप क्रिकेट का एक एग्जांपल ले लो, आज के तारीख में टीवी पे जितने लोग क्रिकेट नहीं देखते उतने इंटरनेट पे जैसे कि हॉटस्टार है उसके ऊपर हमें पता चलता है कि 1.5 करोड़ लोग देख रहे हैं, 80 लाख लोग देख रहे हैं, तो हर कोई मैच देख रहा है। उसके बावजूद भी अगले दिन आपको उसकी न्यूज़पेपर में लिखनी है। तो जो लोगों ने देखा है वही अगर आप लिख रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको न्यूज बिहाइंड न्यूज लिखना है, जो लोगों ने देखा है लेकिन उसके बावजूद भी जो नहीं देखा है, जैसे हम अपने जर्नलिस्ट लैंग्वेज में कहते हैं, बिटवीन द लाइंस जो होता है वो आपको पकड़ में आना चाहिए। जिस दिन आप वो पकड़ सकते हैं आप जर्नलिस्ट बन जाओगे। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। Okay. Abhi, this is very interesting because, and this is very real also. Because as you said, when earlier there was print journalism, people used to read newspapers and they would dig their heads into the newspapers. Then came the radio, the audio medium, and then very soon came the television, which is the audio visual. So many people actually thought, oh, the newspapers are doomed. Now who's going to read when you get such, graphic details in front of you? Itna, there's moving images, there's sound. तो न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है? But you're very right in saying that even if people watch something happening, even if they are a part of that event, they would like to know how it is reported the next day in the newspapers, and that's something very interesting. एक बात अभी भी हमें ये माननी चाहिए कि जो न्यूज़पेपर की जो ट्रस्ट वर्दी जो है, जो ट्रस्ट है, जो न्यूज़पेपर में जो छप के आता है उसकी जो एक क्या कहते हैं ऑथेंटिसिटी है, वो आज भी बरकरार है। मीन्स आप देखिए व्हाट्सएप में आपको स्पीड मिलेगा, न्यूज़ का स्पीड जो है व्हाट्सएप में मिलेगा, लेकिन ऑथेंटिसिटी अगर आप चाहिए तो आज भी न्यूज़पेपर ने अपनी ऑथेंटिसिटी बरकरार रखी है। जैसे कि वहाँ मैंने आपको कहा कि आज का जमाना न्यूज़ देने का नहीं है, न्यूज़ के पीछे की व्यूज़ देने का जमाना है। तो आज आप देखिए कि ज़्यादातर
जो न्यूज़पेपर है दे ट्रांसफॉर्म फ्रॉम न्यूज़ टू व्यूज। जैसे कि एडिटोरियल है, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर ऐसे जाने जाते हैं कि जो उनके एडिटोरियल के लिए जाने जाते हैं, उनके व्यूज़ के लिए जाने जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी देखिए उनके एडिटोरियल व्यूज़ होते हैं बाय उसमें लिखा हुआ होता है। तो आज भी लोगों में वो पसंद ही है कि हाथ में न्यूज़पेपर लेके पढ़ना चाहिए, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन दैट पोजीशन अक्रॉस। जैसे हमने कहा कि आज हम डिजिटल के ऊपर बात कर रहे हैं, मीन्स 5 साल पहले अगर हम लोग सोच रहे थे कि प्रियमवदा मेरा कुछ इंटरव्यू ऐसे ले रही है तो हम लोग यकीन नहीं करते। जैसे मुझे याद है आज भी, मैं आई वाज इन एथेंस ओलंपिक 2003। तो एक मिक्स जोन होता था, दिस अ मिक्स जोन। Every player who won the medal passed that mixed zone, and thousands of journalists standing in a queue to ask the questions, and the player has to give every questions answer। उनके ऊपर वो बंधन होता था कि कोई भी अगर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट आपको अगर सवाल पूछता है तो बिना जवाब दिए आप उसको आगे नहीं जा सकते। तो 2003 में जब मैं एथेंस में था तो देयर इज अ सिंपल बड़े बड़े लंबे कैमरे जो थे स्टैंड के ऊपर खड़े रहते थे, जो प्रिंट के जर्नलिस्ट नोट पैड और पेन लेके खड़े रहते थे। टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती गई, और जब मैं लंदन पहुंचा, लंदन ओलंपिक में, तो मुझे आज भी याद है लंदन ओलंपिक जो था, मैंने अपना नोट 20 जो था उस जमाने नोट 5 आता था, तो मैं नोट 5 मोबाइल लेके गया था और मैंने अपने पूरे मोबाइल के ऊपर वो शूट किया था अपने चैनल के लिए। तो उसके बाद बीजिंग आया, बीजिंग के बाद लंदन आया। तो लंदन में ऐसा होता था कि जो 100 कैमरे पहले लगते थे उसमें से 80 कैमरे लगते थे और बाकी 20 लोग जो थे वो मोबाइल से शूट करते थे। फिर मैं ब्राजील गया, ये प्रोपोर्शन 50-50 पे आ गया। और जब मैं अभी टोक्यो में था तो वो प्रोपोर्शन इतना चेंज हुआ था, 80% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया cover on this mobile and 20% on the regular that bada camera. So technology changed everything from print to electronic also। ये जो मोबाइल था इसके ऊपर मैंने डेढ़ 2-2 घंटे डिबेट किए हैं, एबीपी मादा के लिए, आईबीएन लोकमत के लिए, काफ़ी सारे चैनल के लिए। तो जब मैं 2008 में जब ये मोबाइल यूज़ कर रहा था तो लोग मेरे पास देखते थे कि क्या गरीब बंदा है, इसके पास कैमरा भी नहीं खरीदने के लिए। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी हो लगी, नाउ एवरीवन हैज यूज्ड दिस बिकॉज द स्पीड इज देयर, डाटा इज देयर। और फॉरेन कंट्री में स्पीड जो होता है बहुत बड़ा, इट्स हैंडी एंड द स्पीड इज अमेजिंग, मींस यू कैन नॉट बिलीव इट। मींस वी आर nowadays we are talking about the 5Gs and all that, but that day they have got the more than the 5G speeds. Means we have one DM app on this mobile, you just on that and just talk. They just need 350 kbps speed for that. At that time in London and then the Brazil, we get the 3500 kbps time for that, so 10 times which are require more than that. So it's amazing world, means the technology evolve everything, and from print to electronic we have to accept the truth and have to move on. That's it. Great, great. That's a part of the technology, Sandeep ji. But tell me something. The whole idea is, as you move from, like, as you said, this is the latest technology. Now, if there's somebody wants to be, because we're looking at this program from the perspective of a career as well, apart from the sports. If somebody wants to become a sports journalist, what, according to you, are the qualifications, the requirements? Because now technology is so handy that I think practically everyone can start using it. But apart from that, as a sports journalist, आपकी कुछ qualifications, कुछ requirements हैं? According to you, what are these? The first and most important, Priyamvada, you should be a sports lover. That's it. Means sports आपके दिल में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, सांस में होना चाहिए. Then and then only you become the sport journalist. If you want to become a sport journalist to earn the money, then this business is not for you. You just be a sports lover. Because at my time, means when I chose this career in my young days, मेरे जो कलीग थे, मेरे जो फ्रेंड थे कॉलेज के, they are paying the ticket and taking off from their job to attend the match. Instead of that, I got a payment from my newspaper or my channel to watch that match. That is the difference. Means लोग अपनी छुट्टी डाल के, पैसे डाल के, खरीद के टिकट दे के मैच देखने जाते थे, और मैं बंदा था जिसे मेरा ऑफिस खुद भेज रहा था पैसे दे कि भाई आप जाके ये देखो और हमें बताओ. So अगर दिल में अगर आपके स्पोर्ट्स हो, दिमाग में, सांस में स्पोर्ट्स हो, then and then only become the sports journalist. Otherwise, this job is not for you because you have the lots of patience for you. Means मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पेशेंस से क्या होता है. अभी टोक्यो ओलंपिक में जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, so there is so many restriction on the all journalists. You cannot meet the people directly. You have to make the distance, and then there is a in Japan they are itself law-abiding people are there. So they put so many restriction on us. And it's very difficult to cover the Olympic, talk to the people. It's very difficult, and taking interview is the of
इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो जैसे नीरज ने मेडल जीता, एवरीबडी डिड द इंटरव्यू वाया जूम लिंक एंड ऑल दैट. लेकिन मैंने सोचा ये स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा गोल्ड मेडल है जो आज तक किसी ने जीता नहीं है, और उसका जूम से जो एक जो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है, वो जो आमने सामने बात करने में आता है, वो जूम से आता नहीं. तो मैंने सोचा कुछ भी हो जाने दो, मुझे नीरज का 1-to-1 करना है, सामने उसके खड़े रह के माइक उसके सामने रख के उससे बात करनी है. तो जापान और हमारे में 2-2.5 घंटे का डिफरेंस है, टाइम जोन अगर आप देखेंगे तो 2-2.5 घंटे का डिफरेंस है. अपने यहाँ जब 10 बजे थे इंडिया में, तो वहाँ 12:30 बज गए थे, और जो हमारी डेडलाइन होती है चैनल की, वो तो तकरीबन खत्म ही हुई थी. लेकिन मैंने अपने एबीपी माझा के असाइनमेंट, विजय साहब यहाँ के स्पोर्ट्स हेड थे और काफ़ी सारी वहाँ असाइनमेंट थे, उनको मैंने कहा था कि आई एम ट्राइंग फॉर द नीरज, एंड वी आर द ओनली चैनल, एबीपी माझा इज द ओनली चैनल दैट दे नीरज चोपड़ा gave the interview. That was the exclusive, ever exclusive. Means आप सोचिए भारत का पहला, मीन्स आज भी मेरे रोंगटे खड़े हुए ये बात करते हुए कि आप सोचिए कि भारत को जिसने स्वर्णिम इतिहास जिसने रचा हुआ है, वो बंदा आपके चैनल के ऊपर है और सबसे पहले आपके चैनल के ऊपर है. तो उसके उसके जैसी कोई बात हो नहीं सकती. आप यकीन नहीं करोगे कि ओलंपिक का एक रूल होता है, जैसे आप मेडल जीतते हो तो आपको मेडल जीतने के बाद आपको डोपिंग टेस्ट करनी जरूरी होती है. तो नीरज चोपड़ा को डोपिंग टेस्ट के लिए ले जाया गया, और एक सर्टेन क्वांटिटी में जब तक आपकी यूरिन आती नहीं है तब तक आपको वो छोड़ा नहीं जाता. वो यूरिन जब तक आप पास नहीं करते बॉटल में, जब उसकी डिपॉजिट नहीं होती, तब तक आपको बाहर भेजा नहीं जाता. आप यकीन नहीं करोगे, उस दिन रात को 2:30 बजे, रात को मीन्स जापान के रात को 2:30 बजे, अपने यहाँ 11:30 बजे थे, 2:30 बजे उनकी जो डोपिंग टेस्ट थी वो कंप्लीट हो गई थी. तब तक वहाँ के जितने मेरे इंडियन फेलो जर्नलिस्ट थे, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, सब घर जा चुके थे, अपने अपने होटल पे जा चुके थे. मैं अकेला बंदा अपना एबीपी माझा का बूम लेके वहाँ स्टेडियम में खड़ा हूँ, और मेरा लक उसमें इतना अच्छा चल रहा था कि जो डोपिंग सेंटर था, वहाँ जो कार्यकर्ता थे, जो वहाँ उन्होंने जापान ओलंपिक कमेटी ने जो वहाँ अपॉइंट किए थे, उसमें से काफी सारे महाराष्ट्र से जो थे वो मराठी थे, और वो एबीपी माझा देखते थे, एबीपी न्यूज देखते थे. तो मैंने अपना मराठी का जो एक फंडा रहता है कि ऐसे कहा जाता है कि हम मराठी आदमी जो है वो काफी अच्छा मीठा बोलते हैं, कोकण के लोग तो ज्यादा मीठा बोलते हैं. तो मैंने अपना ये पैंतरा उनके ऊपर फेंक दिया और वो चल गया. और उन्होंने कहा कि सर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि डोपिंग सेंटर को 3 डोर थे एग्जिट होने के लिए, और 2 डोर जो थे वो रिस्ट्रिक्शन डोर थे, जहां कोई भी जा नहीं सकता था. यू कैन गेट लीगलाइज पेनलाइज फॉर दैट. तो मैंने कहा कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन उस बंदे को, नीरज को, इस गेट से बाहर लिए जहां मैं खड़ा हूं. उन्होंने कहा सर आप चिंता मत कीजिए, हम भी एबीपी माझा देखते हैं, हम उनको यहीं से लाएंगे. और रात को 2:30 बजे नीरज चोपड़ा अपनी डोपिंग टेस्ट करके बाहर है, जहां मैं अपना खड़ा था वहाँ उसका इंटरव्यू लेने के लिए. आप यकीन मानिए इतना बढ़िया इंटरव्यू हुआ मेरे आज तक के 25 साल के करियर का. आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू, और वो इतना डाउन टू अर्थ है. मुझे अपने हमारे असाइनमेंट से कहा जा रहा था, क्योंकि ये मैं जो जर्नलिस्ट होना चाहते हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज एंड द न्यूज के बीच की जो लाइन है वो कितनी जरूरी है. मुझे हमारे असाइनमेंट से कुछ कहा गया था कि भाई नीरज चोपड़ा जो रोड मराठा है, रोड मराठा मीन्स जो मराठा सरदार जो थे पानीपत के युद्ध के लिए जब नॉर्थ में गए थे, और पानीपत के युद्ध में जब परास्त हो गए तो वापस महाराष्ट्र में आए नहीं अपमान के कारण, तो वो वहीं पले बसे. तो जो मराठा वहीं पले बसे थे उनको रोड मराठा कहते हैं, और नीरज चोपड़ा इज बिलोंग टू दैट रोड मराठा फ्रेटर्निटी. सो चोपड़ा से लेके चोपड़ा करके वो चोपड़ा हो गया. तो ही इज अ नोन रोड मराठा. उनके घर में आज भी मराठी रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं. तो इंटरव्यू शुरू होने से मैंने उनको कहा ऑफ द रिकॉर्ड कि सर नीरज जी, मुझे कहा जा रहा है कि असाइनमेंट से कि आपको रोड मराठा के बारे में सवाल पूछा जाए, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और मेरे स्टेट के लिए सबसे बड़ी बात है, मैं आपको रोड मराठा के लिए सवाल पूछ सकता हूँ क्या. तो उसने इतना बढ़िया जवाब दिया. उन्होंने अपना मेडल जो था सीने पे लगा वो अपने हाथ में लिया और मुझे कहा कि संदीप जी, आज ये जो गोल्ड मेडल है किसी नीरज चोपड़ा का नहीं है, किसी स्टेट का नहीं है, किसी भाषा, किसी प्रांत, किसी जात धर्म का नहीं है, पूरे इंडिया का मेडल है. अगर हो सके तो आप ये सवाल मत पूछिए, क्योंकि उससे खामखाम एक बकेड़ा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आज देश को सेलिब्रेट करना है, किसी स्टेट को सेलिब्रेट नहीं करना है. और फिर मैंने भी वो सवाल उनको पूछा नहीं, और जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ, नीरज चोपड़ा सेइंग थैंक्स टू मी, उन्होंने कहा कि संदीप जी थैंक यू वेरी मच, आज आपके पास एक चांस था एक ब्रेकिंग न्यूज पूछने के लिए कि ये अगर आप पूछते तो मुझे तो जवाब देना था हाँ ना या फिर नो कमेंट में, लेकिन आपने वो सवाल नहीं पूछा, इसलिए थैंक यू वेरी मच. तो मैंने कहा कि आप मुझे थैंक यू, आई शुड बी थैंक्स टू यू कि आपने पहला इंटरव्यू जो है 1-to-1 मुझे दिया. दिस इज विथ मी फॉर एवर.
तो मैंने उनको कहा कि आज तक मैंने 5 जी मेरा 5वां ओलंपिक है, 4 ओलंपिक मेरे हुए थे, ये 5वां ओलंपिक है और ओलंपिक में 5 जो सर्कल रहते हैं, तो मेरा अभी ओलंपिक पूरा हो गया। दिस इज़ माय रिटायरमेंट डेज़ नाउ, क्योंकि जो देखना था वो मैं आज देख चुका हूँ और आप मेरे सामने हो। तो आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने अपने बैग्स में कहा दिस इज़ अ मोमेंटफुल मोमेंट, मीन्स जो फॉरएवर मेरे साथ मेरे Important हार्ट में moment. रहेगा। So Sandeep ji, basically, yeah, उन्होंने क्या what I किया, एक understand, गिव मी 2 सेकंड फॉर यू। उन्होंने अपने yes, बैग से टी-शर्ट निकाला, उस टी-शर्ट के ऊपर हाँ, उन्होंने एक सिग्नेचर कर दी अपने नाम की, और वो टी-शर्ट मुझे दिया। आप यकीन नहीं करोगे, जिस जिस समय उन्होंने वो गोल्ड मेडल जीता, वो जीतने के बाद मैदान को जो उन्होंने राउंड लगाते समय जो टी-शर्ट था, वो उन्होंने मुझे दिया। आज उसकी अगर कीमत आप मीन्स आप यकीन नहीं मानेंगे, आज उसकी लाखों में कीमत है, लेकिन वो टी-शर्ट उन्होंने मुझे एज़ अ बतौर मोमेंट दे दिया कि संदीप जी आप ये रखिए, आप मेरे साथ इसके शिकवे। और देते समय वो इतना डाउन थे, उन्होंने कहा कि संदीप जी थोड़ा-सा उसको सँभलिए, इसमें से पसीने की बदबू आ रही है। तो मैंने कहा ये पसीना नहीं है, आने वाली जनरेशन के लिए ये आपकी मेहनत का सुगंध है। सो दैट इज़ द डे, मीन्स इसके अलावा आपको और क्या चाहिए जीवन these में? are, yeah, ही these इज़ are some fine moments and exciting moments as you have shared. So I think श्योर, that would itself be a great aspiration, for those who are thinking about or aspiring for a career in sports journalism. At this moment in the program, I would like to invite Supriya Badve ji. As I said earlier, Supriya Badve, who's the CEO of Sportsindi, and here she joins us a bit late, a bit far, but yes, she's here. Supriya ji, good evening and welcome on the show. It's your show. Yeah, good evening, Sandeep ji, and या वेलकम ऑल द I'm वे फ्रॉम, sorry आई थिंक, because फ्रॉम my एयरपोर्ट। flight got delayed. I was traveling from Indore, and I just landed, and that's why I joined from airport only. So या आई सॉ दैट right बिहाइंड now यू। I am at airport. Maybe there may be some noise, so kindly excuse me for that. But I really want to welcome you on this platform, and I just joined and I heard about your experience with Neeraj Chopra, and really it's a proud moment. And you थैंक्स, थैंक्स might सो मच। have this is a lifetime moment for you also, maybe थैंक यू। because getting a gold medal for the एक्चुअली country and then interviewing such a great personality is always like it's a pride moment for as a citizen, as a sports journalist. So from all aspects, you might have enjoyed that moment. So Actually, I just first of forget to all, bring thank that T-shirt to show that our viewers, means I just forget that T-shirt, instead of I will just hang it there. It's a moment. Oh, next time. yeah, I'm yes, sure. yes. I'm sure we are going to have another opportunity, Sandeep Chavhan, for that Sure, moment. sure. Uh, Supriya ji, since you are here on the show, let me, and we are already two-thirds into the programs. I would like to immediately ask you this one question, because this is the first month where we have now started, the first Saturday where we have started with the idea of sports journalism, and that's how we have invited Sandeep Chavhan, who has been such an experienced sports journalist as well. Why did you think, but because you are you're not just a face, but you're basically the one who has conceived this entire idea of this program. Why did you think about covering sports journalism in the world of sports? What was your idea? Uh, Uh, Thanks, Priyamvada. And I just feel that journalism, where it may be in day-to-day life or it may be in sports or any kind of maybe Bollywood industry, Hollywood industry across the globe, these people plays a great role, and I think they are the right person to share the right views and spread right message across the society. So what I feel that whatever we are doing for through World of Sports is like we are promoting sports, we are trying to build a sports ecosystem, and we are just discussing more about the various components of sports ecosystems. Like as I always shared, the sports ecosystem consists of uh, journalism, mentorship, coach, and dietitian, nutritionist. A player is of course a big is at always at center, but these all factors matters a lot as far as sports ecosystem is concerned, and that's why I feel sports journalism plays very important role because say there was not many doubts and concerns earlier into
earlier 2000, but in last two decades, sports industry has grown like anything, and like with introduction of IPL and IPL and Kabaddi League, these things have been addressed, and I think during this whole transformation for sports industry, sports journalism has played a bigger role. So I think so. This is the right time to introduce sports journalism in sports in on Sports Indie platform. Thank you so much. Well, thank you, Supriya ji. Thank you for that answer. And now let me come back to Sandeep ji. Sandeep ji, you just spoke about. You said in the beginning that uh, you should be passionate about the sports. You should have sports in your heart, in your mind, in your breath. But tell me something. And you also said that every sports journalist need not be. I mean, it's not possible because there's so many areas of sports. You can't be a pro at everything. You would not have played everything. Yet, I want to ask this question: are there different types within the sports journalism? I know there are different types of sports, but within sports journalism, are there different types? And if there are, which are they? Would you be able to comment on that? When I started sports journalism, there is a specialist sports journalist, just like someone covering a cricket, then he will cover cricket entire his career. Then someone a football specialist, someone a hockey specialist. But nowadays, the scenario is so changed that now you have to be a multitasking. You should cover cricket as well as the hockey as well as the football. You should know about the archery. You should know about the table tennis. You should all know about the badminton and everything. So those days are gone now. Means specialization is gone now because of the globalization of the all thing. The money is there. Problem is there. So that day was gone. Means at my the career, means early days, there is a specialist cricket correspondent is there. So they give the immense knowledge of the cricket because they have to cover only cricket and cricket and cricket. But nowadays you have to be a master in all. Uh, it's affect your all the thing, but the thing is that you have to accept the situation and move on. और जैसे आपने जो कहा था कि जो स्पेशलाइजेशन जरूरी है तो बिल्कुल जरूरी है, जो आपके दिल के करीब गेम है उसके करीब तो आप जा ही सकते हैं, लेकिन कुछ गेम ऐसे हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, जैसे ग्राउंड लेवल पे जाके आपको दिखना चाहिए। कबड्डी है, खो खो है, फुटबॉल है, एवरीथिंग। आज क्या होता है, आपको व्हाट्सएप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर एवरीथिंग, यू गॉट द रिजल्ट एंड यू जस्ट स्टार्ट टू राइट द न्यूज। बट जो फील ग्राउंड पे आता है, मुझे याद है जब मैं आईबीएन लोकमत न्यूज चैनल पे था तो हमारे चेंबूर में एक जो काम करने वाली जो औरत होती है, उसका जो लड़का था 8 साल का, इज अ वेरी टैलेंटेड फुटबॉल प्लेयर। और नेदरलैंड से एक कोच आया था, ही ऑर्गेनाइज द इंटरनेशनल कोच, जो अभी अमिताभ का जो पिक्चर आया था, द सेम लाइक किसी एनजीओ ने एक फुटबॉल का एक कैंप रखा था और उसको कोच को इनवाइट किया था। एंड ऑल ऑफ सडन दैट बॉयज गोज दैट शिविर। जब उस कोच ने उस लड़के को देखा तो उन्होंने कहा कि ये लड़का मुझे यूएस में चाहिए, ही मे बिकम द रोनाल्डो ऑफ द इंडिया। और फिर हमने उसकी न्यूज की थी। अभी दिक्कत ये थी कि उस कोच ने कहा था इसका अमेरिका में रहने खाने का खर्चा मैं करूंगा, केवल आप इसकी वीजा और टिकट की इंतजाम कीजिए। अभी वो जो काम करने वाली जो औरत है उसको महीने में मुश्किल से 10-12 हजार रुपए मिल रहे, हस्बैंड नहीं है, माँ और बेटे दोनों झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। तो हमने आईबीएन लोकमत पे एक न्यूज चलाई कि इंडिया का अगला रोनाल्डो झुग्गी झोपड़ी में पेज जा रहा है टैलेंट। तो आप यकीन नहीं मानोगे, पूरे महाराष्ट्र भर से इतनी उनको हेल्प आई, अनोनिमस, हर एक ने कहा कि भाई हमें उनको हेल्प करनी चाहिए, बस आपका नाम मत दीजिए। उसमें से एक का नाम आज मैं जरूर लेना चाहूंगा। एक बुल्ढाना बैंक के जो एमडी थे, उन्होंने मुझे उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि संदीप जी ये जो लड़का है ये अमेरिका जाना चाहिए, इसके लिए जो भी खर्चा होगा हम करेंगे। तो हमने उनका एप्लीकेशन ऐड करके बुल्ढाना बैंक ने उनके अमेरिका वीजा और टिकट के लिए पैसे दे दिए, हमने वो वीजा के लिए डाल दिए। अभी आपको पता है यूएस का वीजा कितना कठिन होता है। जब उसके कैटेगरी में लिखा कि उसकी माँ जो है वो घर काम करती है, 10-15 हज़ार उसकी सैलरी, तो फर्स्ट टाइम उसका वीजा कैंसिल हो गया। तो हम लोग सब निराश हो गए कि क्या कर सकते। तो वापस हमने बुल्ढाना बैंक को अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, जितनी बार चाहिए उतना हम कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने अमेरिका से अंडरटेकिंग लाया, बुल्ढाना बैंक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी स्पॉन्सरशिप, और
फिर वो लड़का जाके अमेरिका में ट्रेन हुआ. नाउ डेज ही इज द मींस सेंसेशन इन फुटबॉल. मे बी आप उसका नाम आने वाले 3-4 साल में आप सुन सकोगे, और मे बी वन डे ही मे बी यूर गेस्ट ऑन दिस शो. तो ऐसे काफी सारे स्पोर्ट्स टैलेंट है जिसको हम खोज सकते हैं बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनको दुनिया के सामने ला सकते हैं, उनको एक्सपोजर दे सकते हैं. तो it's not a sports journalist work. You go and cover the matches only. So many talent across the India, across the Maharashtra. You just have to go there, pinpoint that talent, and give you a platform to flourish them. That also called the sports journalism, which I think. I think that's a very valid point, because it's not just about covering the players and the field in which they're playing, but it's also to explore the opportunities for many others. That's what sports journalism. We're almost coming to the end of the program, and it's been a great discussion going on. But the last question that I would want to ask: what do you think for sports? Because you said the times have changed, technology is becoming more modern. The idea of journalism is also itself going through a change, because there are people coming in, citizens reporting, and all those things. What are the do's and the don'ts of a sports journalist, according to you? Very Very quickly. crucial. It's a very important question of this. एक शेर है, वो जो शेर प्रेमोदा, उसमें ऐसे कहा जाता है कि पैरों को छूने वाली लहरें जो है वो जहाज डुबाने की भी ताकत रखते हैं. तो ये पैरों को छूने वाली लहरें जो है उसको जहाज डुबाने वाले तक का उसका जो टाइमलाइन है, अगर ये टाइमलाइन अगर आप कैच कर सको तो यू बिकम अ गुड जर्नलिस्ट. आपको लाइन बिटवीन द लाइंस का अगर डिफरेंस पता चले, देन यू कैन बिकम अ गुड जर्नलिस्ट. इट्स नॉट मैटर आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है या फिर सोशल जर्नलिस्ट. व्हाट कि आपको जो लोगों को नहीं दिख रहा है वो आप उनको दिखाना चाहिए. अगर ये आप कर सकते हैं तो आप जर्नलिस्ट है. और जैसे मैंने कहा कि यहाँ से अगर आप शुरू करें तो वो जर्नलिज्म है, यहाँ से शुरू करें तो वो प्रोफेशन है. आपको जर्नलिज्म यहाँ से शुरू करना है. अगर यहाँ की सोचे तो प्रोफेशन तो हर कोई प्रोफेशन है, लेकिन जर्नलिज्म ही ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप दिल से काम कर सकते हो, आपको दिल से आनंद मिल सकता है. मोर देन द सैलरी, इट्स अ जॉब सेटिस्फैक्शन, वी कैन से दैट. प्रियंवदा, I'm sure. Thank you very much for that answer, Sandeep Chavhan, and thank you very much for joining us on this program today. We have started this whole series of sports journalism with you, and we would not have thank had a you. better person, to discuss with and to start with this. So, My thank pleasure. you very much for being in the world of sports, and I'm sure for all those, who are watching us today and continue to watch us, there's going to be another exciting episode on the world of sports. So stay tuned. Be with us next Saturday at 5 p.m. and we'll see you. Take care.